Hello kids, how are you all? I hope you all are good. So, today we will learn social science. And in social science, we will learn civics. And this is the part 2 of the video. So, I request students kindly go through first part of the video so that second part will become more clear to you. So, and in this we will learn our first chapter, that is the Indian Constitution. I will repeat the name, the Indian Constitution. Okay, so kids, take out your books and concentrate. First I will read and then I will explain. Okay, so let's get started with the video. The Indian Constitution key features. By the beginning of 12th century, the Indian national movement have been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalist has devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey the rules that they had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that the free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out in the way which democratic government would be set up in India and rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became the member of Constituent Assembly in 1946 and who meet periodically for next 3 years to write Indian Constitution. So, beginning 12th सेंचुरी के बिगनिंग में इंडिया ने अपना नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था और वो बहुत एक्टिव हो गए थे अपने इंडिपेंडेंस पाने के लिए ब्रिटिश रूल से। तो इतनी साल स्ट्रगल के बाद जब लोग बैठते थे और वो लोग इमेजिन करते थे कि वो लोगों को किस टाइप का फ्री इंडिया चाहिए, क्या हमारा इंडिया किस तरह का होना चाहिए, जब वो डेमोक्रेसी में मिलेगा तो वो कैसा होना चाहिए। तो तब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हमारा जो इंडिया होना चाहिए वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए जहां लोगों को भी पूरा राइट हो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो लोग बैठते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक आदमी के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑलमोस्ट वहाँ पे 5 मेंबर रहे हैं, 300 मेंबर रहे हैं जो कि रेगुलर आते थे कॉन्स्टिट्यूशन में और वो लोग प्रॉपर इसको लिखते थे। ठीक है, तो ये लोग पीरियडिकली मिलते थे 3 साल पे, फिर वो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा करते थे। इज इट क्लियर किड्स? तो ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। स्टार्ट कैसे हो रहा है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे लिखा गया, कैसे लिखना चाहिए, एवरीथिंग। तो हमारा नेशनल मूवमेंट बिगिन हुआ था और बेसिकली पहले लोग ब्रिटिश रूल में लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रगल सहा था, बहुत ज़्यादा ज़िल्लत सही थी, बहुत ज़्यादा स्लेव की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। इसीलिए वो लोग जो इंडिया फ्री इंडिया चाहते थे वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे जहाँ सभी लोगों का इक्वल रोल हो, किसी का भी कोई ऐसा रोल ना हो जो बहुत वियर्ड हो जाए या बहुत ख़राब हो जाए। सबका एक इक्वल रोल हो, सब डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो। डिसीजन मेकिंग मतलब लोग पीपल, मतलब जिससे कंट्री बना है उससे वो लोग इसमें इन्वॉल्व हों। Let's proceed to the next. This member of Constituent Assembly has a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different regions and had distinct culture. Also, when the constitution was written, India was going through a considerable turmoil. The partition of country into India and Pakistan was imminent. Some of the priestly states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All this issue played on the mind of the member of Constituent Assembly as they drafted the constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving the national
unity, the final government of reflects their concern for eradicating poverty through social economic reform as well as enforcing the crucial role the people can play in choosing their respective representatives. Listed below are the key features of Indian Constitution. While reading this, keep in mind that above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform, representation that author of this book were grappling with. Try and understand the way in which they try to balance this concern with their commitments to reforming the independent India into a strong democratic society. Federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. In India, we have government at the state level, at the central level. Panchayat Raj is the third tier of the government who we have read about in this your book, class 6 book. We looked at the functioning of the state government in your school, class 7 book. And this year we will read more about the central government. The vast number of communities in India meant that system of government needed to be diverse that did not involve any person sitting in the capital city of New Delhi. ओके तो इसका मीनिंग है फर्स्ट पैरा आप देख सकते हैं उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बहुत बड़ा टास्क था अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए क्यों क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते थे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन बिलोंग करते थे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से रहते थे और सबसे बड़ा बहुत बड़ा टास्क ये था कि हम उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब हम इंडिया और पाकिस्तान का जो था वो बंटवारा हो रहा था ठीक है और बहुत सारे हमारे जो देश में बहुत सारे अलग अलग असेंबली और बहुत सारे इशू हमारे माइंड में थे तो लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लिखा जाता था तो लोग ये सोचते थे कि किस तरह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए जो सबके हित में हो डाइवर्सिटी को देखते हुए सोशल इकोनॉमी को देखते हुए सब कुछ देखते हुए कैसे लिखा जाए तो ये उनके पास बहुत ही बड़ा टास्क था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ठीक है अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि की फीचर है कैसे हम ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे इन विच the balancing their concern with the commitment transforming the independent India with the strong democratic country. फिर हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप लिए जिसमें से एक था फेडरलिज्म उसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्री में इन्वॉल्व किया गया ठीक है अब नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हमारे पास रोल था Decision for everyone. Instead, it was very important to have another level of government in the state so the decision in India enjoy autonomy in exercising power on the certain issue. Subject of national concern requires that all this state follow the law of central government. The constitution contained the list that detail the issue that each tier of government can make law. In addition to the constitution, all the specific which each tier of government can get the money from the work that is does. Under the federalism, the state was not merely urgent for a federal government but draw their authoritarianism for the country as well. All the person in India was governed by the law and the policy made by each of this level of government. Parliamentary form of government. The different tiers of government tried that you just read about consist of representatives who begin to elect by the people. Your class 7 book begin with a story of Kanta who was standing in the line to vote during the election. So इधर इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश में क्या किया गया मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट लाया गया ठीक है हर स्टेट में स्टेट के थ्रू उसके अंदर भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट था ताकि हर एक लोगों का इशू हर एक लोगों का प्रॉब्लम सुना जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सब सारे लिस्ट उनके पास अवेलेबल थे जिससे हमारा देश जो है हमारा देश उस पर चल सकता है ठीक है तो उनको पता करना था कि हर एक लेवल पे क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या ऐसा इशू जा रहा है तो उनको हर चीज़ पता करने के लिए उनको क्या करना पड़ा हर एक स्टेट में डिफरेंट लेवल्स लाने पड़े ताकि लोगों के बारे में हम लोग जान सके ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे लोगों के हित में बन सके ऑल द पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लॉ एंड द पॉलिसी मेड बाय ईच दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो जितने भी इंडिया में लोग हैं वो गवर्न किए जाते हैं लॉ और पॉलिसी जो हर एक इंडिया लेवल ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट पे
मैच है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्रियल, ठीक है, पार्लियामेंट जो हमारा है उसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, लोगों के थ्रू लिए जाते हैं, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड बाय द principle of universal adult franchise, the Sir A.K. Iyer, the member, remarked that this was done with abundant faith in the common man and ultimate success of democratic rules in full behalf that introduction of democratic government on the basis of adult suffrage। तो ये सारा चीज़ था, वो लोग वोट देने आते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंट द अंडर यूनिवर्सल अडल्ट suffrage for all the citizens. When they were making the constitution, the member of constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the mass for universal adult suffrage, and that would help to encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, gender hierarchies. This means that people of India has a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also consist in election. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representative is a crucial to the democratic functioning in Unit 2 in this book. Separating power. According to the Constitution, there are the three organs of government. They are legislature, the executive, and the judiciary. The legislature refers to our elected representative in a smaller group of people who are responsible for implementing law and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of court in their country. In order to prevent the misuse of power by one branch of government, the Constitution may say that each of these organs could exercise different powers. Through this, each organ acts as a check on the organs of the government that ensures the balance of the power between three. So, Constitution of Indian guaranteed, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे जाके वोट्स देते थे, और इस तरह हमारे बीच का जो डिफरेंस, जो हमारे लोगों के बीच का डिफरेंस है वो मिटा। वो कैसे मिटा, जब लोग वोट देने आने लगे तो कोई कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारा जो क्लच हमारे माइंड में था वो सारा टूट गया। तो लोग पार्टिसिपेट करने लगे वोट्स में। तो इससे हम लोग को पता चलता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा तो इसमें आपको समझ में आया तो कि सबको राइट मिला, कोई भी लो कास्ट, अपर कास्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को पूरा राइट मिला कि वो लोग जाके वोट दे सके। अब यहाँ पे है थर्ड पॉइंट हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर। अब पावर को सेपरेट किया गया। पावर को कैसे सेपरेट किया गया, थ्री ऑर्गन्स बनाए गए गवर्नमेंट के, ठीक है। तो पहला था हमारा लेजिस्लेचर, फिर दूसरा था एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा था जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर में क्या होता था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे जिनको हम इलेक्ट करते थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब छोटे लोग मतलब कि जो हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग इलेक्ट करते थे वो उनको पावर बताते थे, वो उनको उनको बताते थे कि आपको क्या करना है। मतलब बेसिकली लेजिस्लेचर जो सेलेक्ट हुआ है, मतलब मान लो पीएम सेलेक्ट हुआ है, तो वो अपने डिफरेंट ग्रुप को बता रहा है कि उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और थर्ड हमारा जुडिशरी, जो आप चैप्टर नंबर 3 में इस बुक में पढ़ेंगे। बट बेसिकली होता क्या है जुडिशरी में, होता है हमारा कोर्ट, मतलब कोई भी चीज़ हमारे गवर्नमेंट में हो रही है जो कि गवर्नमेंट के बियॉन्ड है, मतलब कि गवर्नमेंट उनको नहीं मानता है, तो वो सारा चीज़ इसमें फॉलो किया जाता है जुडिशरी में। कोर्ट, क्रिमिनल केसेस, चाहे कोई भी केस, चाहे आप लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में भी आप जो गलती कर रहे हैं वो कोर्ट में ही आपको आके वो करना पड़ेगा। तो हमारा जो पावर था, गवर्नमेंट का पावर था, वो तीन जगहों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा हमारा हो गया जुडिशरी। ओके, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। फंडामेंटल राइट्स, मेन राइट्स। ओके, द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज अ
conscience of the Indian Constitution, colonial rule has created a certain suspicion of the government in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that the set of written rights would guide against the misuse of state power in independent India. The fundamental right, therefore, protect the citizen against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individual against the state as well as against other individual. Moreover, the various majority community has expressed the need of constitution to include rights that would protect their group, and constitution therefore guaranteed by the rights of minorities against the majorities. As Dr. B.R. Ambedkar said about this fundamental right, that their object is twofold. The first object is that every citizen must be a position to claim those rights, and secondly, these rights must be blindly upon every authority that has got the power to make law. In addition to the fundamental right, the Constitution also have a section of directive people principle of state policy. The section was designed by the member of the Constituent Assembly, ensures the greater social and economic reform, and serve as a guide to the independent India state to institute the law and policy that help to reduce the poverty of masses. ओके तो हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट आया जिससे लोगों को पूरा का पूरा पावर दिया गया. कौन कौन सा पावर दिया गया, क्या क्या पावर दिया गया, किन की मेजॉरिटी थी. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के थ्रू. ये आप लोग सबको पता है. ठीक है, बी आर अम्बेडकर के थ्रू लिखा गया है. तो हमारा फर्स्ट राइट जो है वो है राइट टू इक्वालिटी. All the persons are equal before the law. This means that all the persons shall be equal protected by the law of the citizen. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has the access to the public place including the playground, hotels, shops, etc. The state cannot determine against any in the matter of employment, but there are the expectation to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished. फ्री टू इंडिया, फ्री राइट टू फ्रीडम. तो इक्वालिटी मतलब सब चीज़ों में इक्वालिटी. किसी के लिए कास्ट उनका सेक्स, उनका रिलीजन, ये नहीं देखा जाएगा. आपको देखा जाएगा सब कुछ, आप लोग इक्वल, कोई अनटचेबल नहीं होगा. किसी को देख के आप अछूत वाला फील नहीं कर सकते हैं. फिर सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम. इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेस द राइट ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, द राइट to move freely and reside in any part of the country, and right to practice any profession, occupation or business. फ्रीडम, सबके पास फ्रीडम होगा कि वो कहीं भी आप कंट्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी प्रोफेशन, कुछ भी ऑक्यूपेशन को, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना तो वो स्टार्ट कर सकते हैं. राइट टू against exploitation. The constitution prohibit the human trafficking, forced labor and employment of child under 14 years or age. राइट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उसके अगेंस्ट था. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, लेबर्स को किसी की तरह फोर्स नहीं किया जाएगा. एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन को मतलब चाइल्ड लेबर नहीं बनाया जाएगा. 14 साल से पहले किसी को काम करने का वो नहीं था. उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन फ्रीडम टू प्रोवाइड टू ऑल द सिटीजन. एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, प्रोपोगेंडा एंड द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. अब किसी को भी कोई भी रिलीजन चूज़ करने का हक था. कोई भी कहीं भी चूज़ कर सकता था, कोई भी कहीं भी किसी भी प्लेस पे जा सकता था, अपने प्रेयर्स को प्रेयर कर सकता था. कोई किसी को भी कोई रोक नहीं रख सकता है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट मेजॉरिटी minorities, religion and language had set up their own educational institution in order to preserve the development in their own culture. Right to constitutional remedies allow the citizen to move to the court if they believe that any of their fundamental have been violated by the state. तब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब होता है कि सिटीजन को अलाउ किया गया कि आप कभी भी कोर्ट में आ सकते हैं और अपने बिलीव के अंडर जो आप अगर फंडामेंटल राइट में से आपको कोई भी राइट्स नहीं प्रोवाइड की गई हैं तो उसके लिए आप आके बेशक लड़ सकते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा 6 फंडामेंटल राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और वो लिखा किसके द्वारा गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, लोगों को देखते हुए. ओके, हमारा तीसरा है सर्कुलिज्म. A circular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about the following
chapter. Now understand the way in which the country history often determine the kind of constitution that the country adopt by itself. The constitution play a crucial role in laying out the ideal that we would like all the citizens of the country to adhere to, include the representative that we elect to rules. Just like the game of football, the change of constitute rules will affect the game. The Indian constitution has been abandoned over the year to reflect the new concern of polity. Often the major change in the constitution make the change in the fundamental nature of the country. We saw in this case Nepal how we need to adopt a new constitution after it became a democracy. The different features of Indian constitution outlined above include the complicated idea that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this movement. It take rest of the book as well in your higher classes. We will read about more in different features of the Indian constitution under more substantively what they mean. सर्कुलरिज्म मीन्स कि हमारे स्टेट में एक रिलीजन फॉलो ना किया जाए, हर एक रीजन को इक्वल राइट दिया जाए. तो आप हिस्ट्री में देखे हैं कि जब कोई हिंदू है तो वो अपने एरिया में हिंदुज़म लाने की कोशिश करता है, तो इस तरह चीज़ों को ना किया जाए. तो आपको इस सर्कुलरिज्म और मोर फंडामेंटल इस चीज़ों को सेपरेटली आपके नेक्स्ट क्लास में, आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि इसका हर एक टॉपिक आपके चैप्टर्स में दिया गया है. ओके, सो किड्स, नाउ आई विल एंड हियर ओनली. ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द हेरिटेज स्कूल for upcoming videos. Okay kids, bye, have a good day and take care.